Hello students, this is the second part of the structure and the function of neuron, and this is Dr. Mamta Sharma from Department of Zoology, Rajrishi Government College, Alwar. तो लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स किस पहले बात करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पोल्स, वो किस तरह से डिवाइडेड हैं. First is non-polar neurons. These type of neurons bear separate branch processes. There are no functional difference between the axon and the dendron. Each process can bring impulse to the cyton or can take away from the cyton. ओके सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्सॉन और डेंड्रॉन में कोई डिफरेंस नहीं है. These neurons are rare in vertebrates but common in cnidarians such as hydra. Okay, vertebrates में बहुत कम मिलते हैं या मिलते ही नहीं हैं. Now second is unipolar neurons. Such neurons has a single process which arise from the cyton. True unipolar neurons with an axon and no dendrite are found in the embryos of invertebrates and vertebrates. देखो, दिस इज़ द फर्स्ट नॉन पोलर. इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है बिटवीन द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स. ये यूनिपोलर है. इसमें सिर्फ एक एक्सन है जो अराइज, एक सिंगल प्रोसेस निकलता है, दैट इज एक्सन. ओके, now let's come to pseudo unipolar neurons. A single process arises from the cyton and then divides into axon and dendrite. Such neurons are termed as pseudo unipolar neurons. What are bipolar neurons? These neurons have only two processes, an axon at one end and dendrite at another end. Bipolar neurons are found in the retina of the eye. Now let's talk about multipolar neurons. These neurons have several dendrites and an axon. Motor neurons and interneurons are multipolar. Okay, जो motor neurons होते हैं और interneurons होते हैं वो multipolar होते हैं. These are most common type of neurons. They are present in the gray matter of brain and spinal cord. Okay, now see the diagram. This is a pseudo unipolar. एक ही स्ट्रक्चर है, वो एक्सॉन और डेंड्राइट में डिवाइड हो गया. देन यू हैव अ बाइपोलर, देन यू हैव अ मल्टीपोलर. मेक दीज डायग्राम्स इन योर आंसर्स टू कीप देम. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन न्यूरॉन कैसे डिवाइडेड है, लेट्स टॉक अबाउट दिस. First is sensory neurons. These are the receptor neurons which connect sense organ with the central nervous system. They bring sensory impulse from sense organ to nervous system. Then we have a motor neurons. These are the effector neurons which connect central nervous system to the effectors. They carry impulse away from the heart or away from the brain ऑन टू द इफेक्टर. मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर की तरफ जाते हैं इम्पल्स. इंटरन्यूरॉन्स. These are the connected neurons that are present in the central nervous system and occur between the sensory and motor neurons for the distance transmission of impulse. They are neither sensory nor motor but are meant for carrying the impulse. Okay. So on the basis of the function, there are three types of neurons. First is sensory, then second is motor, then third is interneurons. On the basis of the covering, let's see how is the neurons are divided. Medullated or myelinated nerve fibers. These are white in appearance. These neurons are consist of following parts. First is the axis cylinder.
It is simply the axon or the dendrite of a nerve cell. Its neuroplasm is known as exoplasm, and the membrane surrounding the axic cylinder is known as exolemma. Exolemma conducts the nerve impulse. Then there is a medullary sheath. It is also called as myelin sheath. It is composed of a substance called myelin. Myelin sheath acts as an insulating layer which prevents the loss of energy of the nerve impulse. It works like a coating on the electric wire. क्या करती है myelinated sheath? It protects the loss of energy from the nerve impulse. तो nerve जिस पोटेंसी से आती है उसी पोटेंसी से आगे जाती है. It is like a insulating covering. It works like a coating on the electric wire. The myelin sheath is a continuous in the CNS but in peripheral nervous system. Central nervous system में तो continuous होती है, but peripheral nervous system में it is absent at certain points called nodes of Ranvier. The part of a nerve fiber between two successive nodes of Ranvier is known as internode. Each segment of myelin sheath is made up of Schwann cell. Now neurilemma. Outside the myelin sheath there is a layer of Schwann cell cytoplasm which is known as neurilemma. A single large and a flat nucleus is present in the cytoplasm. The neurilemma is a continuous cover over the nodes of Ranvier. As stated above, Schwann cell produce myelin sheath. So this is the TS of a myelinated axon. Myelinated axon of a myelinated neuron. There is an axon membrane. उसके बीच में न्यूरोफाइब्रिल्स हैं. Then we have a myelin sheath. Then we have nucleus of a Schwann cell. You can see it here in purple color. Then there is a neurilemma which is the sheath on Schwann cells. And then we have a, देखो कहीं कहीं से टूटी हुई है, वो है nodes of Ranvier और इनके बीच की जगह जो है वो internode कहलाती है. A thin layer of connective tissue called as endoneurium covers the neurilemma. The medullated nerve fiber of brain and spinal cord lack neurilemma. Due to lack of neurilemma, the nerve fiber of brain and spinal cord do not regenerate after injury. These cells have an incomplete covering of neuroglial cells which produce myelin sheath. So myelin sheath is produced by neuroglial cells. Neurilemma present in the cells of peripheral nervous system which enables them to regenerate after injury. The collateral fiber arise from the nodes of Ranvier at the right angles. These modulated nerve fibers are found in the white matter of brain and spinal cord and in the cranial and spinal nerves. Conduction of impulse is more faster in myelinated nerve fiber than non-myelinated one. Make this diagram to equip your answers. Then let's talk about non-modulated nerve fiber or non-myelinated nerve fiber. These neurons are gray in appearance. The non-myelinated nerve fiber consists of an axial cylinder surrounded by neurilemma and connective tissue. They form the gray matter. These fibers do not have the nodes of Ranvier and the internodes. They also lack collateral fibers. They are found in the autonomic nerves. They conduct nerve impulse much slower than the modulated nerve fibers. So this is the structure of non-modulated nerve fiber. There is an axon but there is no sheath is found. So its appearance is grey in color. On the basis of the pathway of impulse, conduction of neurons are of following types.
अब पाथवे ऑफ इम्पल्स के कंडक्शन से हम दो में डिवाइड कर सकते हैं एफरेंट. These are sensory nerve fibers that carry impulse from the sense organ to the central nervous system. अगर हम किसी गर्म चीज़ को टच करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे ब्रेन को इन्फॉर्मेशन जाएगी ये चीज़ गर्म है. ओके, सो द इम्पल्स कंडक्शन इज फ्रॉम सेंस ऑर्गन. हमारी स्किन जो हमने उंगलियां टच करी हैं उसके इससे वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जा रही है. Efferent. These are the motor nerve fibers which carry nerve impulse from the central nervous system to the effective organ. Okay. These are the motor nerve fibers which carry nerve impulse from central nervous system to the effector organ. Effector organ. अब जैसे हमने टच किया हमारे नर्व को, हमारे ब्रेन को इम्पल्स चली गई कि ये गर्म है. सो ब्रेन विल सेंड द इम्पल्स टू द हैंड, टू द स्किन कि हाथ हटा लो, तो विल इमीडिएटली रिमूव द हैंड. सो हियर द स्किन से इंफॉर्मेशन जा रही है एफरेंट नर्व से ब्रेन को, ब्रेन से इफरेंट नर्व के द्वारा ये आ रही है मसल्स को, हैंड्स मसल्स को कि इमीडिएटली हाथ को हटा लो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शन of the neurons. Neurons are the structural and functional unit of the nervous system. Okay, neuron nervous system का structural and functional tissue है. The neural tissue is meant for reception, interpretation and transmission where the neuron receives the stimuli. जब भी कोई स्टिमुलाई जनरेट होती है तो न्यूरल टिश्यू उसको रिसेप्ट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है कि इसका क्या करना है, उसको ट्रांसमिट करता है रिक्वायर्ड ऑर्गन की तरफ कि ये एक्शन होना है. सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी सेंसरी नर्व इम्पल्स टू द इंटरन्यूरॉन्स विच सेंड इम्पल्स टू द मोटर न्यूरॉन्स टू द इफेक्टर्स. दिस इज द प्रोसेस. द सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी नर्व इम्पल्स को इंटरन्यूरॉन्स को भेजते हैं जो इस इम्पल्स को थ्रू मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा इफेक्टर को भेजते हैं. न्यूरॉन्स हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स. इनका काम है कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना डिफरेंट बॉडी पार्ट की एक्टिविटीज़ को. द न्यूरॉन्स इन द नर्वस टिश्यू ऑल्सो एक्ट एज अ सीट ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेमोरीज. बहुत सुंदर चीज़, जो भी हमारी मेमोरीज़ होती हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, नर्वस सब कुछ जाके उसमें स्टोर होता है. कहाँ पे? हमारे नर्वस टिश्यू के अंदर. सो हियर वी कंप्लीट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द न्यूरॉन. थैंक यू सो मच.